Hello, students. In today's class, we'll talk about or discuss a few problems that we have taken from miscellaneous exercise of chapter 13, higher secondary first year mathematics. So, कुछ questions देखेंगे from the NCERT textbook. So, in our previous class, we have discussed about derivatives, and we have also discussed their formulas. We have also got into the complete description of all that physical meaning, geometrical meaning, everything we have discussed completely. Now we are taking on the last topic of this particular chapter, which is the miscellaneous exercise. So a few all the questions are there, and I have taken a few selected questions, which अगर उस पैटर्न पे मैंने कुछ क्वेश्चंस करके रखे हुए हैं, तो अगर उस पैटर्न के हिसाब से तुम लोग सॉल्व करोगे, then it will be very easier for you to understand them. Okay. So with this, let's begin. So all the questions have been given here. I have taken all the questions, and also I have solved them a few, and also I have shown how to solve them. So let's just discuss them one by one. So the first question that we have taken is question number 7, which is 1 by ax square plus bx plus c. तो इसको differentiate करना है, ठीक है? तो as we do as always, let y equal to 1 by ax square plus bx plus c. इसको हम लोग पकड़ लेंगे कि ये पकड़ लो y है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ax square plus bx plus c to the power minus 1, क्योंकि ये reciprocal में है. It will be easier for us to differentiate then. So differentiating with respect to x we get, ठीक है? तो dy dx इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ddx of ax square plus bx plus c to the power minus 1. Then what is the general formula? ddx of x to the power n equal to n into x to the power n minus 1. ठीक है, तो n जो है वो तुम्हारा सामने आ जाता है. सो minus 1 is my n here in this particular case. So ये आ गया यहाँ पे सामने minus 1 into x to the power, इसको मैंने x पकड़ा था मनी मन में, तो x to the power n minus 1. तो n है मेरा minus 1 के साथ फिर से minus 1. अब मैंने किसको x पकड़ा था, तो यहाँ पे फिर से into ddx of ax square plus bx plus c. That will continue. Okay. So minus 1 is here, and ax square plus bx plus c, minus 1, it will become minus 2. Okay. Now अब यहाँ पे तो into term है, यहाँ पे equal to नहीं है actually. This has been the contrast has not been suitable here, so the equal to signs are coming. This is no equal to. I guess in below the pictures are better. So here it is a into. Okay, here it is a into. Here also it is a into. Okay, you will. I guess you are you will be able to understand that. Okay, coming to the topic. ddx of ax square, तो a being a constant वो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन का, तो ddx of x square रह जाएगा. सिमिलरली प्लस b भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ddx of x प्लस ddx of c. ओके, सो माइनस 1 का तो हम लोग माइनस c सामने लिख सकते हैं, तो x square plus bx plus c to the power minus 2. और ddx of x square is twice x, we know that. Okay, since we have practiced a sufficient number of questions, so we can write them directly. Actually होता क्या है, 2 तुम्हारा है वो सामने आ जाएगा, and x to the power 2 minus 1. So 2 minus 1 is 1. So ddx of x square is twice x, and a is already here, so twice ax. Similarly ddx of x is 1, so b into 1 is b, and ddx of c is 0 because c is a constant, तो उसका differentiation 0 हो जाएगा. So what we are getting is twice ax plus b. So dy dx it is coming out to be यहाँ पे minus 2 है, तो अगर इसको हम लोग नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे plus 2 आ जाएगा. The basics that we have learned in our school. So dy dx equal to minus twice ax plus b by ax square plus bx plus c whole square. So this is a very simple differentiation that we have done today. So let's continue to the next question. क्वेश्चन नंबर 13 मैंने किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में भी आते हैं. So I thought that no, let's take this question and try to solve them. So the question is ax plus b to the power n into cx plus d to the power m. So the first thing that we need to do is, let us assume this as y. Let y equal to ax plus b to the power n into cx plus d to the power m. So differentiating with respect to x, we get dy dx equal to ddx of ax plus b to the power n into cx plus d to the power m. So the formula that हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पे, it is your ddx of u into v, product of two functions. Although both are polynomial here, but still we have taken the product of two functions because n and m are unknown to us. They are also constant. So
ax plus b to the power n cx plus d to the power m. So since ये पावर में है तो इसको भी हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको भी देखते हैं. The formula that we have used is ddx of u into v. The formula is u ddx of v plus v ddx of u. First function into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function. तो ये एक इजी सा फॉर्मूला है, इसको हम लोगों ने यूज किया है. तो इसको मान लो मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन पकड़ लिया और इसको मैंने सेकेंड फंक्शन पकड़ लिया. ठीक है. तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो ax प्लस बी अपना जगह पे रहेगा. अब ये जो पर्टिकुलर टर्म है cx प्लस डी टू द पावर m, उसको मन ही मन में मैंने x पकड़ा हुआ है. तो ddx ऑफ x टू द पावर m है यहाँ पे. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ m और n. ओके. सो m है तो m सामने आ जाएगा. इंटू फॉर्मूला क्या है ddx ऑफ x टू द पावर n का n इंटू x टू द पावर n माइनस 1. ठीक है. तो ये जो m है ये सामने आ जाएगा एज पर द फॉर्मूला एंड x टू द पावर m minus 1. So this is the formula that we know. Okay. Now अब मैंने इस पर्टिकुलर टर्म को x पकड़ा था, ये पूरा टर्म को, तब उसको डिफरेंशिएट करना है. ठीक है. This is how we have done differentiation so far. So into ddx of cx plus d. Okay. Similarly अब इस पर्टिकुलर टर्म पे आते हैं cx plus d to the power m into अब ddx of ax plus b to the power n है. ठीक है. यहाँ पे काफी सारा टर्म्स है, ax है और b है, तो हम लोग ये पूरा टर्म को x पकड़ लेते हैं. तो ddx of x to the power n का फॉर्मूला तब क्या होगा n into x to the power n minus 1. n सामने आ जाता है और x जो मैंने पकड़ा है उसमें से n minus 1 हो जाता है. तो सिमिलरली n सामने आ गया, इस पर्टिकुलर टर्म को मैंने x पकड़ा था और ऊपर n minus 1. ठीक है. अब मैंने किसको x पकड़ा था, मैंने ax plus b को x पकड़ा था, तो अब उसको डिफरेंशिएट करना है. तो ax plus b to the power n into m into cx plus b cx plus d to the power m minus 1 into अब यहाँ पे ddx of cx plus d है, तो I have not taken a shortcut. I have just tried to break them step by step. So c into ddx of x. ठीक है. क्योंकि c being a constant तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा प्लस ddx of d. Similarly यहाँ पे भी cx plus d to the power m, n भी अपने जगह पे है, x plus b to the power n minus 1. यहाँ पे भी a ddx of x, like a is a constant, तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा ddx of x plus ddx of b. Now x plus b to the power m, sorry, x plus b to the power n into m cx plus b cx plus d to the power m minus 1 into c plus 0, क्योंकि ddx of constant तो 0 है. Similarly plus cx plus d to the power m into n into ax plus b to the power n minus 1 into a plus 0, क्योंकि ddx of constant यहाँ पे भी 0 आ जाएगा. तो dy dx that we are getting, इसको और भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन since in the exam it may come for 3 or 4 marks, so that much is sufficient. And if you want to arrange it more you can, but don't do any mistake while you do so. So the answer comes out to be dy dx equal to m into c into ax plus b to the power n into cx plus d to the power m minus 1 plus a into n cx plus d to the power m into ax plus b to the power n minus 1. So this is the answer of this particular question. और इस क्वेश्चन में like you know कोई भी कुछ डिफिकल्ट नहीं, टर्म नहीं था, तो only thing we used is product of two function, जो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है. So the only thing that we can do to like you know to जितना भी हम लोग का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स के बारे में कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए इस प्रैक्टिस एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस. ओके. सिस्टमेटिक प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये टर्म यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. Since ये शुरुआती दौर है, so we will be like you know we are more focused on to improve our basics. So once that is done, we can solve any kind of questions then. Okay. So moving on to the next question. ये भी एक काफी इजी सा क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने पहले किया हुआ भी है कि sin of x plus a है, तो we know the formula of ddx of sin x, we know the formula of ddx of sin x. So ddx of sin x is cos x, so that is a very general formula. So I have taken this particular term as x, so let y equal to sin of x plus a. तो मैंने x plus a को x पकड़ लिया है
तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट ddx ऑफ साइन ऑफ x प्लस a. अब मैंने इस पर्टिकुलर टर्म को x पकड़ा था, तो ddx ऑफ साइन x इज cos x. Now I have taken x plus a as my x, so I'll differentiate this particular term also. So I have not written any extra line here because ddx of x is 1 and ddx of a being a constant is 0. So ddx of sine of x plus a is nothing but dy dx is coming out to be cos of x plus a. So this is very simple way to do it. ये क्वेश्चन नंबर 16 है. तो there are different ways to do this and I have chosen another way to do this particular question. Many students may try this particular process also, या फिर u by v देके भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर भी easily आ जाता है and it may it may be easier for you to understand that way also. But I have taken another method to do this because mathematics is all about trying new methods. So what we did here is हम लोगों ने पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेट y इक्वल टू cos x by 1 plus sin x पकड़ लिया. तो जैसा कि क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री में कुछ प्रूफ्स था, इफ यू गाइस रिमेंबर दैट cos x by 1 plus sin x को हम लोग इन टर्म्स ऑफ आई गेस sec x minus sec x tan x कुछ प्रूफ करना होता है. सो वन प्रूफ वाज देयर. सो सिमिलरली वी हैव जस्ट ट्राई टू डू दैट ओनली. हम लोगों ने क्या किया, 1 plus sin x को रेशनलाइज कर दिया, 1 plus sin x into 1 minus sin x और ऊपर भी 1 minus sin x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. तो cos x into 1 minus sin x and here 1 plus sin x into 1 minus sin x is nothing but 1 minus sin square x. a plus b और a minus b हो जाता है. So a plus b into ये हो गया a, ये हो गया b, a plus b into a minus b which is a square minus b square. So 1 minus sin square x. तो cos x into 1 minus sin x and 1 minus sin square x का फॉर्मूला है cos square x. Okay, be very thorough with your formula. तो यहाँ पे एक cos x और एक cos x कैंसिल हो जाएगा. सो बचता क्या है 1 माइनस साइन एक्स बाई cos x. अब इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं क्योंकि ये पहले से ही एलसीएम लिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x. सो द आंसर कम्स आउट टू बी 1 बाई cos x इज नथिंग बट sec x एंड sin x बाई cos x इज tan x. ओके, नाउ वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस. अब इसको डिफरेंशिएट करना और भी आसान है क्योंकि ddx ऑफ sec x वी नो दिस and ddx of tan x is also known to us, so this is very easy to differentiate now. So what do we do is differentiating with respect to x we get ddx of sec x, we have written this, ddx of tan x we have written this. Now ddx of sec x is sec x tan x and ddx of tan x is sec square x. Okay, ये माइनस साइन यहाँ पे पहले से ही था. So this is very easier to do and the answer comes out to be dy dx equal to sec x tan x minus sec square x. Okay, so this is also easier and कुछ स्टूडेंट्स ये भी ट्राई कर सकते हैं अपने घर में, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे u by v लेके भी कर सकते हो. बुक में आंसर कुछ -1 by 1 plus sin x अगर दिया होगा, so don't get confused about it also. This one is also correct, that one is also correct. Like for example I can write this particular term 1 by cos x लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे और tan x को sin x by cos x लिख सकता हूँ. तो यहाँ पे ये वाला टर्म बन जाएगा sin x by cos square x minus sec square x बन जाएगा 1 by cos square x. So if I take the LCM I'll be getting ऊपर कुछ मिलेगा 1 minus sin x और sin x minus 1 actually. So if I take minus common, so वहाँ पे हो जाएगा minus कॉमन ले लेने से 1 minus sin x और नीचे cos square x है, तो cos square x को हम लोग फिर से लिख सकते हैं 1 minus sin square x. तो घूम फिर के ये काफी लंबा सा प्रोसेस हो जाएगा. सो यहाँ तक भी तुम अपने आंसर्स को रख सकते हो. ओके, so there are very different methods that we can use, so you can utilize one by one of them. Okay, so next one that we'll be looking is the next question is question number 25, which is x plus cos x into x minus tan x. Okay, यहाँ पे the formula that we have used is product of two functions. This is u, this is v. So let y equal to x plus cos x into x minus tan x. So differentiating with respect to x we get dy dx equal to ddx of x plus cos x into x minus tan x. Okay, so the thing that we are practicing here or that we are keeping in mind that ddx of u into v को हम लोगों ने use किया है. Okay, we need to keep that in practice and we also need to use the formulae again and again and practice them as much as possible so that we get on the concepts very easily. So ddx of x plus cos x into x minus tan x. So x plus cos x is here and ddx of x minus tan x. So u ddx of v
प्लस v ddx ऑफ u, ये फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन पकड़ लिया, इसको मैंने सेकंड फंक्शन पकड़ लिया, इसको u इसको v कोई भी बोल सकते हो। So after we differentiate, we are getting this as x plus cos x है यहाँ पे, ddx of x is 1, ddx of 10x will be getting as sec square x, and x minus 10x is here, ddx of x is 1 and ddx of cos x is nothing but minus sin x. So the answers that you will be getting is x plus cos x and 1 minus x square x plus x minus 10x into 1 minus sin x। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको उल्टा करके अरेंज किया है, 1 minus x square x है तो मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, देन इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, sec square x minus 1 बन जाता है बिकॉज sec square x minus 1 is a formula which is 10 square x। So the answer comes out to be minus x plus cos x into 10 square x plus x minus 10x into 1 minus sin x। Okay, so another question is there, question number 28, which is ddx of x by 1 plus 10x. So as usual we have taken let y equal to x by 1 plus 10x. So differentiating with respect to x we get, this is also very easy, हम लोगों ने u by v को यहाँ पे use किया है। So the formula for u by v is v ddx of u minus u ddx of v by v square। तो formula कुछ अगर तुम्हारा दो functions they are like in terms of the divide sign, then we can write them as second function differentiation of first function minus first function differentiation of second function by second function का square। तो वही टर्म को यूज किया, इसको अगर हम u पकड़ते हो और इसको v पकड़ते हो, then what is happening, v ddx of u minus u ddx of v by v का square। So 1 plus 10x ddx of x is 1 minus x into ddx of 1 which will come out to be 0 and ddx of 10x is sec square x। तो हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, 1 plus 10x minus x into 0 तो 0 है और x into sec square x x square x। So the answer comes out to be dy dx equal to 1 plus 10x minus x sec square x by 1 plus 10x whole square। So with this we complete our exercise miscellaneous of chapter 13 mathematics, higher secondary first year, and still there are plenty of questions, okay, that you need to practice and you need to do, okay, and wherever you feel problem you may ask, you may feel free to ask me, and with this we are hoping that you are practicing at home and taking care of your parents also as well as your family members and also yourself, and at the same time we all are praying that this pandemic, like it goes away soon from the earth and we all, like normalcy will be restored in the entire world very soon. We are hopeful about this, but at the same time while you are at home, don't forget your studies also and practice them on a regular basis. Thank you so much.